Today I'm going to talk about the different forms of displacement, velocity, and acceleration time graphs for a ball thrown upwards, which is coming down. Graph of objects thrown upwards through a reference point. For example, आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपने बॉल को ऊपर फेंका है, उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पोजीशन थी, आपने बॉल को ऊपर फेंका है, यहाँ से बॉल ऊपर गई है, नीचे आ रही है। अब अगर आप गौर करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ऊपर जाते हुए। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम है, अगर आप इसका ग्रेडियंट देखें यहाँ पे तो मैक्सिमम ग्रेडियंट है, फिर ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, फिर सबसे ऊपर ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को क्या होगा, velocity is zero. Gradient of displacement time graph gives you what? The velocity. So what is happening here is that here the velocity, अगर यहाँ पे velocity थी 7, अब हो गई है 4, यहाँ पे 0। फिर जब बॉल नीचे आना शुरू होगी तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो velocity यहाँ पे -3, यहाँ पे -7, यहाँ पे -9। लेकिन velocity कम होती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन velocity कम हो रही है। तो अगर मैं इसका velocity time graph बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? The velocity time graph is going to look like this. Forget about your O level. Here the velocity is maximum. Here the velocity is 0. At this point, you see the velocity is 0. We are plotting the gradients here. We are plotting the gradients. The gradient is maximum at that point, right? And the gradient is 0 at the topmost point. And what happens is that it goes all the way like this. You have the gradient becomes more negative and negative and negative. So this is a graph of velocity with respect to time. This is a graph of velocity with respect to time, right? अब अगर हम बात करें acceleration time graph की, तो gradient of acceleration time graph gives you what? Velocity time graph gives you what? Acceleration. If you find this gradient, it is a negative gradient. And if you plot it on acceleration time graph, it's going to be like this. It is going to be a straight line, and you see that this is negative acceleration. And this proves why the acceleration is always negative. If you take upwards direction is positive and downwards direction is negative, we saw that earlier, that acceleration is always going to be negative. So that's why the acceleration here is minus g. ये देखा ना, ये लाइन है y is equal to minus mx plus c की, minus mx plus c, तो इसका ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट। डिफरेंशिएशन पढ़ी है, उसमें आप देखें तो dy by dx अगर देखें तो ये ग्राफ है y is equal to minus ax square plus bx plus c का, इसको डिफरेंशिएट करें तो आपके पास वो आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है -2ax, मतलब -mx। फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो -m, मतलब कहने का मतलब है ग्रेडियंट सही है, ठीक है। ये पैराबोला है विद अ नेगेटिव साइन -ax स्क्वायर, राइट, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाकी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Talked about the gradient of displacement time graph gives you the velocity. Let us talk about what does the area under the velocity time graph gives you. We have here the velocity and the time. There's the velocity here, and this is the time that we have, and we have a straight line like this. For example, if you look closely here, the displacement can be written as v into t. मतलब आप डायरेक्टली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ये जो आपके पास है, और ये आपके पास वेलोसिटी है, और ये आपके पास टाइम है यहाँ पर। तो अगर आप उनको डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर आप थोड़ा और गौर करें तो ये एक रेक्टेंगल है। What is this? This is a rectangle. अच्छा जी, if you look closely here, this is a rectangle, right? And what's going to happen is
that you can write here area is length into width. What is the length here? This is the time here, so I'm going to write here t into v, and this is the same thing as that, v into t. Same cheez aa rahi hai. So area under the velocity time graph gives you what? Displacement of an object. आप एक बॉल को ऊपर फेंके तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी. अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. मैं इसको s/मीटर कह देता हूँ, ये टाइम है, और ये कुछ इस तरह से बनेगा. वापस अपनी पोजीशन पे आ गया. फॉर एग्जांपल इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी? 0. वापस आ गया. अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? इस तरह से. और आप देखेंगे कि अगर आप गौर करें इन दोनों के एरियाज इक्वल है. ये जब ये ऊपर तक जा रहे हैं, यहां से आपने बॉल को फेंका, यहां तक इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपके पास ऊपर जाने तक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई है. और जब वापस बॉल ने रुख किया तो it goes like this. So area A is now equal to area B when it comes back to its original position. So we have the total displacement here. If this is area A, this is area B. Area A plus minus area B, क्योंकि नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना, तो आप माइनस का साइन लगाएंगे वहां पे. So whatever that is, अगर वापस आ गया तो 0. Let's do a question. Let's do a past paper question. This question is from March 18, paper 1-2, question number 8. March 18, paper 1-2, question number 8. The velocity time graph for an object is shown. How can the total displacement of the object be determined? Area 1 को area 2 से माइनस करें, अभी हमने यही तो किया है यहाँ पे. अगर आप थोड़ा गौर करें तो what we have done here? We have done the same thing. Area A प्लस माइनस एरिया बी, वो माइनस हो जाता है सीधे. इसमें आप माइनस कर रहे हैं. इट्स एरिया 1 माइनस एरिया 2 है. तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा. राइट. There's another question here. Summer 20, paper 1-3, question number 6. What is the displacement of the ball from the ground at time in 3 seconds? पहले वाले के एरिया ले, दूसरे का ले, दोनों को माइनस कर दो. ठीक है. अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है? एरिया ए अगर आपके पास है, ये ए इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ऐसे ही है. बेस कितनी है यहाँ पे? 2. हाइट कितनी है? 20. ठीक है. आपके पास यहाँ पे जो बेस है वो 2 है और हाइट कितनी है? 20. तो ये आ जाएगा 20 मीटर. एरिया ए. एरिया बी अगर आप निकालें तो हाफ इंटू बेस 1 है, हाइट इसकी 10 है, ये 5 आ जाएगा ना. तो 20 माइनस 5 करें तो क्या है? असल में आप कह रहे हैं 20 प्लस माइनस 5, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो इसकी में तो ये आंसर आएगा 15. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन ऑल पॉसिबल वेरिएशंस. जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हो सकता है. आपने ओ लेवल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे. और यहाँ पे आपने वही चीजें याद रखनी है, साइन कन्वेंशंस वाली. आई वांट टू टेल यू. फॉर एग्जांपल, आई हैव हियर the displacement on the y-axis, and I have time on the x-axis here. This is x/meter. This is time second, for example. I have various different possibilities here. This is like this. Then we have something of this sort. Then we have like this. Then we have like this. कुछ इस तरह से है हमारे पास ग्राफ पर. इसमें सारी possibilities मैंने include कर दी. अच्छा, ये सेगमेंट ए है, दिस इज पार्ट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, आई कॉल दिस ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, एंड दिस इज एच. All the different scenarios that can occur in a displacement time graph. Remember that the displacement, this is the first thing that you should know. The gradient of the displacement time graph gives the velocity of an object. This is the first thing that you should know. What is happening at A? It is constant velocity. If we have constant velocity, then acceleration is
0, right? Displacement uniformly बढ़ती जा रही है. We have object is moving with constant velocity. Acceleration is 0 meter per second square. Acceleration is 0 meter per second square. Is that clear to everyone? What is happening at B? At B, what is happening is that object is at rest. That means the velocity is 0. And that also means that the acceleration is also 0 meter per second square. Is that clear? What is happening at C? Velocity is increasing. Object is accelerating. Velocity is increasing all the way. You see the velocity because the gradient is increasing. And the object is accelerating. समझ आ रही है जी? C पे gradient बढ़ता जा रहा है. बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. D पे क्या हो रहा है? Velocity is decreasing. When the velocity decreases, it is deceleration. It's not decreasing acceleration. जब भी velocity कम होगी तो वो decelerate करेगा. Acceleration negative होगी. ये displacement time graph है. आपने velocity निकाल के आगे फिर सोचना कि मैंने क्या करना है. So what is happening at D is that the velocity is decreasing and object is decelerating. And we call this negative acceleration. We call this negative acceleration. E पे क्या हो रहा है? It is constant negative velocity. It's constant negative velocity. Is that clear to everyone? Now F and G are a bit intriguing, right? You have to look at the gradients and then you have to decide what is happening. पहले gradient को देखना है, gradient को देख के सोचना है कि हो क्या रहा है. So what is happening at F is velocity is increasing. That is, it goes from -7 meter per second to -4 meter per second. Velocity is increasing. The object is accelerating, right? अच्छा, speed decrease हो रही है लेकिन यहाँ velocity increase हो रही है लेकिन speed decrease हो रही है. ये भी लिख देता हूँ. Speed is decreasing. Object is accelerating, which is positive acceleration. This is positive acceleration. Is that clear? What is happening at G? तो velocity तेजी से डिक्रीज हो रही है लेकिन स्पीड बढ़ रही है. ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. स्पीड बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सो इन G velocity is decreasing. स्पीड क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेडियंट स्टीप होता जा रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो बढ़ रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. वापस तेजी से जा रहा है. हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन स्पीड बढ़ रही है. ये क्या वेक्टर्स है? दे आर वेक्टर. स्पीड इज नॉट अ वेक्टर. वेलोसिटी को आपने एक्सेलरेशन के साथ लिंक करना. सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट इज decelerating. What is happening at H? Constant negative velocity. Let us talk about the velocity time graphs.